second. So to start with sequence analysis, we will do a few of the analysis that we can do in this class. So let's try to understand this, and not from the perspective of the class, but you need to understand this, that you will utilize them in your research that is coming forth in the coming semester. So first of all, there is a tool to view and edit chromatogram. So for chromatogram, what is actually a chromatogram? When we do sequencing or like we do sequencing in sequencers, and we get the sequence like A, T, G, T, C, G, T, A, like this sequence from the sequencing. So this is actually how we get the sequence. Initially, we were in the lab, and we have a sequence, and like a DNA, we have DNA or RNA, total DNA or total RNA, and we amplify. We need to amplify the P and that DNA from the total DNA or from the RNA, if that is RNA. So from the RNA, we did reverse transcription, and after that we get the cDNA, and after that we do PCR. In the PCR, what we did, we use two primers. One is the forward primer, and the other one was reverse primer. So that was the reverse primer from here, and that is from here if I draw it like here. So this is actually on the second strand, but like I will draw it here. So this is actually the forward primer, and that is actually the reverse primer. So these primers, what they will do, they will amplify the sequence. So now I will get more sequences, amplification products. So in the PCR, we will get more products. So this is actually the amplification products of the DNA. So we get like, and if arbitrary, I say that if this is 1 kb, so 1000 bases, these are like, I say like 1000 bases, yeah, or 1000 base pairs. So this is 1000 base pair long product, and we get many amplification products. After that, after doing that, what we do is actually sequence this. So this is actually the sequence that we got from this product. And this sequence is like through sequencing. This was through PCR, and this is through sequencing. After we getting the sequence, now at this stage, I'm not concerned with this. I'm just from this perspective, at this stage, we got the sequence, and now we need to analyze either this sequence is correct or not. Either we can rely on this sequence or not. So the sequencing facility will send us, or if we are using some sequencing facility, that will send us 2 or 3 files. One is dot like normally .abi file, or what the sequencing facility is. Like we have sent some file, and that is like abc dot like they could be like insulin .abi, like if they name it like insulin, so insulin.abi. So this one file, the other will be like insulin.txt file, or that could be fast a file. Normally that is txt. So that is text file. So this text file can easily be opened in the notepad. And what people do, people normally open this file. People don't normally open this file, notepad file, this file, and get this sequence. GG sir, GG जी बताएं.
Okay, so but this is not what is required. We need to check the chromatogram, and one will be the PDF file as well. So insulin.pdf, one will be the PDF file. So you will get this file, and one is the PDF. So the most important is to check either this sequence is correct or not. So what we will see, there will be the ABI file or the PDF file. So in the ABI file, there will be a peak file. And this will be like this. So this peak file will be like, this is T, this is for T, this peak is for A, this peak is for G, like for, or like this peak is for G, and so on. So this peak file is known as chromatogram. So this peak file is known as chromatogram. So now this chromatogram is important to check either you can rely on this sequence or not. So this chromatogram could be either SCF files or ABI files. So now from this peak file, we could understand either we can rely on this or not. So if these peaks are sharp and they are not overlapped, so that will mean you can rely on the sequence. But if this peak file is like this, if this peak file is like this, so now there is no peak for like there is, this is T, and this is C, and this is G, and this is A. So this peak cannot be relied upon now because the peak is not resolved better. So this sequence is not reliable. So you need to resequence your sequence. Am I clear or not? Class? सर समझ आ रही है, ये जो आपने अभी बताया ना इसकी बात समझ में आई। कहाँ पे जो बताया ये? सही, हाँ जी। हाँ, ये आगे जाके दोबारा भी आ रही है। सो मेरा ये मतलब है कि यहाँ से पीक फाइल इस तरह शार्प पीक होंगी हर एक न्यूक्लियोटाइड के, सो दैट मीन्स वी कैन रिलाई। लेकिन अगर शार्प पीक नहीं है और इस तरह स्ट्रेट लाइन है और नीचे वो दिए हुए न्यूक्लियोटाइड दिए हुए, सो वो फिर रिलायबल नहीं है, या मिक्स है, इस तरह है, इस तरह मिक्स वो है, पीक्स हैं, ठीक है। सो हम उसको फिर रिलाई नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक है। या यहाँ पे इस तरह दूसरी पीक इस तरह आई हुई है, इसके साथ ही आई हुई है, ठीक है। तो वो ज्यादा रिलायबल नहीं है। सो हमने इस पीक फाइल को देखना है, क्रोमेटोग्राम को देखना है, वंस वी गेट द सीक्वेंस, ठीक है। सो डोंट रिलाई ऑन द टेक्स्ट फाइल ओनली, do check for the ABI file as well or SCF file as well, ठीक है। so chromatogram को जरूर देखें। तो for chromatogram what you will do actually is three possibilities are there. So let me Noreen, यस सर। ओके, आपने इस साइट पे जाएं, इस साइट फिंच टीवी, ये नोट कर लें, .softwareinformer.com और क्लिक डाउनलोड। ओके सर, मैं जाती हूँ। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज थ्री पॉसिबल। अब अगर कोई पॉइंट म्यूटेशन है, सो लाइक आप लोग जो है लाइक वी आर वर्किंग ऑन कैंसर, किसी कैंसर पे हम काम कर रहे हैं, हमारे पास पेशेंट का सैंपल आ गया, ठीक है, ब्लड सैंपल है या कोई टिश्यू सैंपल है। सो अगर वो हमारे पास आ गया एंड उसमें हमने क्या करना है, डीएनए आइसोलेट कर लिया और प्राइमर हमारे पास है, हमने एम्प्लीफिकेशन कर ली और एम्प्लीफिकेशन के बाद हमने उसको सीक्वेंस कर लिया। सीक्वेंस करने के बाद
कोई एक लोकेशन है जिस पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे लाइक सीक्वेंस हमारे पास आ गया, और इस सीक्वेंस में इस लोकेशन पे हम बता रहे हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये चेंज है फ्रॉम द प्रीवियसली नोन सीक्वेंसेस। जो प्रीवियसली नोन सीक्वेंसेस हैं वो उससे ये एक म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है, तो इसकी वजह से ये कैंसर बना है। ठीक है, सो द पेशेंट बिकम कैंसर। सो हमने एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से कह दिया कि द कैंसर दिस कुड बी दिस कुड गिव राइज टू द कैंसर। ठीक है, और सम अदर डिजीज। ठीक है, सम मोनोजेनिक डिजीज और सम अदर डिजीज पॉइंट म्यूटेशन की वजह से कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। सो एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, एक एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट की वजह से जो सीक्वेंसिंग में हमारे पास रिजल्ट आया है उसकी वजह से हमने कह दिया, बट दिस पॉइंट म्यूटेशन वी नीड टू हैव इन माइंड कि ये किस किस वजह से हो सकता है। सो अ पॉइंट म्यूटेशन मे बी अ सीक्वेंसिंग एरर, ये सीक्वेंसिंग एरर हो सकता है। सो चेक क्रोमेटोग्राम, आपने क्या करना है कि क्रोमेटोग्राम को चेक करना है। तो अब ये देखें कि फॉर इंस्टेंस ये पीक्स फाइल है, और यहाँ पे जो हम म्यूटेशन का कह रहे हैं वो पीक जो है वो यहाँ पे है ही नहीं, थोड़ी सी पीक इस तरह है, और ओवरलैपिंग किसी और के साथ भी ओवरलैपिंग है, लाइक किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ भी ओवरलैपिंग है। सो ओवरलैपिंग न्यूक्लियोटाइड्स है। तो और यहाँ पे वो है, लाइक यहाँ पे है सी, और जो पहले रिपोर्टेड है उसमें यहाँ पे जी था, पहले जो लोगों ने रिपोर्ट किया हुआ है वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लाइक ए है, न्यूक्लियोटाइड ए है, और हमारे पास सी आ गया, और हम कह रहे हैं कि ये सी जो है जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है या कोई डिजीज हो रही है। बट एक्चुअली दिस इज अ सीक्वेंसिंग एरर, सीक्वेंसिंग के दौरान यहाँ पे कोई एरर आ गया है और सही सीक्वेंस नहीं हुआ ये रीजन। तो हमने क्या करना है, उसको रीसीक्वेंस करवाना है, ताकि ये पीक जो है ये अगर शार्प पीक हो तो दैट कुड बी रिलाइड अपॉन। लेकिन यहाँ पे कोई पीक नहीं है, शार्प पीक नहीं है। ठीक है, एंड सेकंड क्या हो सकता है, वो पॉइंट म्यूटेशन किस वजह से हो सकता है। सो फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस्ड कि वो किसकी वजह से हो सकता है, वो जो है वो सीक्वेंसिंग एरर हो सकती है। Second, mutation could be during the PCR amplification. So PCR amplification की वजह से भी mutation can happen. We have discussed earlier कि अगर हम टैग polymerase यूज कर रहे हैं, टैग polymerase अगर यूज कर रहे हैं PCR में, so this is error prone PCR, it has low fidelity, इसकी fidelity बहुत कम है इस टैग polymerase की। सो टैग polymerase की fidelity कम है, टैग polymerase ने क्या करना है, फॉर एवरी 1000 बेसिस, ये 1000 बेसिस जब एम्पलीफाई करेगा तो 1 बेस ओवर 1000 बेसिस जो है वो गलत न्यूक्लियोटाइड लगा सकता है। So that one could be, that one गलत nucleotide could be due to the PCR amplification. ठीक है, so now we have the mutation, like we got mutation in our sequencing product. That mutation which we call a mutation, that could be a sequencing error, or a PCR, or a mutation due to the use of tag polymerase. So वो PCR amplification में भी मसला बन सकता है। और इस चीज को एक दफा फिर भी देख लें कि ये 1/1000 बेसिस हैं, लेकिन हमने एम्पलीफिकेशन कितने साइकिल के लिए करनी है। आप लोगों ने अगर पीसीआर पढ़ा हुआ है, सो वी डू इट एटलीस्ट फॉर 25 और 30 साइकिल्स। सो और उसमें बिलियंस ऑफ कॉपीज बन सकती हैं। तो उन बिलियंस ऑफ कॉपीज में हर एक 1000 में एक एक न्यूक्लियोटाइड एक कॉपी में एक जगह लग सकता है, दूसरी कॉपी में दूसरी जगह लग सकता है, तीसरी कॉपी में तीसरी जगह लग सकता है। एंड जब सीक्वेंसिंग करते होते हैं तो उसमें दोबारा एम्पलीफिकेशन होती है सीक्वेंसिंग के दौरान। आपने सीक्वेंसिंग अगर पढ़ी हुई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग फ्रॉम कवरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम Sanger the first generation to the second generation and the third generation सीक्वेंसिंग, अगर आपने सीक्वेंसिंग पढ़ी हुई है तो अब वहां पे आपको अंदाजा होगा कि बिलियंस ऑफ कॉपीज तो सिर्फ एम्पलीफिकेशन में बनती हैं। इसके बाद जब सीक्वेंसिंग अगर करते होते हैं तो वहां भी हम एम्पलीफिकेशन करते होते हैं।
इन द फर्स्ट एंड द सेकंड वन, थर्ड में एम्प्लीफिकेशन नहीं करते, थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग में। सो वहां पे इतने कॉपीज बनाते हुए अगर हम टैग पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, सो इट विल गिव राइज टू मोर एरर्स। सो जो म्यूटेशन हम कह रहे हैं कि जिसकी वजह से डिजीज कॉज हुआ है, शायद एक्चुअल पेशेंट में वो म्यूटेशन ना हो, वो शायद सीक्वेंसिंग एरर हो, वो शायद पीसीआर एम्प्लीफिकेशन का एरर हो। ठीक है। सो अब पीसीआर एम्प्लीफिकेशन को करेक्ट करने के लिए क्या करें? रिपीट द पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, रिपीट इट, और यूज हाई फिdelity polymerase like PFU DNA polymerase. So high fidelity polymerase यूज कर लें। So this will give you better results. And और सीक्वेंसिंग एरर को देखने के लिए क्या करना है? क्रोमेटोग्राम देख लें। ठीक है। नोरीन, आपने रन कर दिया, डाउनलोड कर दिया हुआ है? सर मैंने ओपन तो किया, आप देख लें एक बार कि यही है। हाँ, एक एक मिनट बस वेट कर लें। एंड थर्ड इज, उसके बाद क्या होगा? लाइक थ्री पॉसिबिलिटीज की बात की थी ना, कि पॉइंट म्यूटेशन कुड बी ऑफ थ्री पॉसिबिलिटीज, एंड द थर्ड वन इज द रियल म्यूटेशन। हो सकता है ये रियल म्यूटेशन हो। अगर रियल म्यूटेशन है तो हमने देखना है कि सीक्वेंसिंग एरर तो नहीं है, वहां पे सीक्वेंसिंग एरर नहीं होना। हमने पीसीआर को रिपीट करना है अगर हम टैग पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, या अगर हम हाई फिdelity पॉलीमरेज यूज कर लें, तो इसका मतलब है कि वो रियल म्यूटेशन है, अगर ये चीजें नहीं है तो। ठीक है। सो दीज थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर अ म्यूटेशन। जी फरीन, यू रेज्ड योर हैंड। सर मैंने ये पूछना था कि फिर हम टैग पॉलीमरेज की जगह डायरेक्ट ये वाला क्यों यूज कर लेते हैं? Because that is less expensive. The PFU is more expensive. The high fidelity polymerase is because we will do amplification in our routine work, and people do use tag polymerase because of its cost. And okay, नोरीन, आप प्लीज शेयर कर दें स्लाइड, जो विंडो है, स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज। आई वांट टू चेक। जी, दिस इज द फिंच टीवी। इसको क्लिक करें। आपने क्या, एक मिनट, वेट 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 वेट, ओपन को क्लिक ना करें, वेट। डाउनलोड, नीचे जाए, ये डाउनलोड मैनेजर है, नहीं ये नहीं, ये डी ने मास्टर नहीं, ऊपर जाए दोबारा। हाँ, बस यही आ रहा है, ये x86। आपका सिस्टम x86 है? पता नहीं हाँ, सर, एक यहाँ पे काम मैंने कर, कुछ डाउनलोड किया है ये साइट पर, फिंच टीवी में हाँ मैंने ठीक हो लगाया। गया। ये कौन सा क्लिक किया था इधर? ये सारे सर फिल, इसको क्लिक। हाँ, इसको क्लिक किया था, ठीक हो गया। गुड गुड गुड, ठीक है। कुछ और चीजें क्लिक नहीं करनी, बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर, दिस लाइक वेब पेजेस डू हैव वायरसेस एक्चुअली। ओके सर। ठीक है। ओके, अब अपना सिस्टम एक दफा देख लें कि आपका सिस्टम कौन सा है। आप नीचे टूल बार जो है, वेट, इसको सबर कर लें, इसको जस्ट ओपन करें, और ये नीचे टूल बार, सर्च टूल बार आपका है ना, सर्च नीचे, उसमें लिखें। सर कहाँ? नहीं नहीं, ये तो मिनिमाइज करें ना, इसको मिनिमाइज करें, ये साइट आप यूज नहीं होगी बस। ठीक है। हाँ, और इसमें सर्च, जहाँ पे टाइप हियर टू सर्च लिखा जी हुआ है, सर। हाँ, यहाँ पे क्लिक करें, DXDIAG लिखें, डी डी DXDIAG, नहीं नहीं, डी फॉर डॉग, डी एक्स। XDIAG, ये सर ये ऊपर आ आ गया। रहा है, हाँ एग्जैक्टली। क्लिक करें इसको, अपना सिस्टम देख लें कि ये क्या है। ये तो ऑनलाइन चला गया है। हाँ, इसको क्लिक करें, इसको ओपन एंड रन DXDIAG। नहीं, इसको क्रॉस करें, दिस ये तो उसमें चला गया, नहीं ये नहीं, DXDIAG वहां दोबारा लिखें, DXDIAG, और अब क्लिक कर, हाँ ये ऊपर रन कमांड, हाँ दिस वन एग्जैक्टली, यस।
वेट वेट वेट, अभी आ जाएगा। हाँ ठीक हो गया। अब जो है ना आपका सिस्टम जो है ये ऊपर लिखा हुआ है 64 बिट है, ठीक हो गया। ओके सो आपका 64 बिट है, आपने 64 बिट के लिए डाउनलोड करना है, ठीक हो गया। ये आप और इन्फॉर्मेशन अगर इस सिस्टम में देखना है तो ये नेक्स्ट पेज करें तो ये हो जाना है, लेकिन इसको मिनिमाइज करें, वी डोंट नीड नाउ। जस्ट ये देखना था कि ये 86 है, सॉरी ये 64 है या 32 बिट है। अब जाए उसमें वेब पेज पे, सॉरी वेब पेज नहीं, वो जो, हाँ ये x86 का डाउनलोड किया था। अब आपने जो डाउनलोड किया था उसको ओपन करें, हाँ इसको क्लिक करें और सेटअप को रन करें ऊपर setup.exe। क्या आ रहा है सर? हाँ अभी इंस्टॉल सब हो रहा है। ठीक हो गया। हाँ नेक्स्ट करें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा तो इस तरह आपने इंस्टॉल कर देना है टूल, ठीक है। फिंच टीवी आपका इंस्टॉल हो गया, क्लोज करें इसको, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ये भी क्रॉस करें, बाकी सारी चीजें क्रॉस करें। सर यहाँ से सर्च करूँ? ये आ हाँ गया यहाँ पे सर। फिंच टीवी को ओपन करें, ये आपके पास इस तरह विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसमें आपने क्रोमेटोग्राम, जब सीक्वेंसिंग की फाइल आ जाएगी ना, जो .abi या .scf फाइल है, वो यहाँ पे ड्रैग करें या यहाँ से फाइल को क्लिक करके ओपन करके इसमें ओपन कर लें। तो ये जब ओपन करेंगे ना तो आपके पास अभी scf ABI की फाइल नहीं है, आई विल ईमेल यू, मैं ईमेल कर दूंगा, लेकिन फिलहाल जस्ट आई वांट टू शो कि ये इंटरफेस किस तरह आपके पास ओपन होना है, बिकॉज आई वांट टू लाइक, मैं ये चाह रहा था कि वो जो लिमिटेशन है वो खत्म हो जाए, एक दफ़ा आप कम से कम स्टार्ट करना शुरू करें ना। अच्छा अब आप इसको मिनिमाइज करें और अब जो विंडो है, जो स्क्रीन है वो अनशेयर करें, ताकि मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन शेयर कर दूँ। थैंक यू। एंड अब आपने जो पीक फाइल है, जो फिंच टीवी है, यू डाउनलोड that, and now this is used to read chromatogram files. Simply drag and drop ABI files or SCF files, the chromatograms actually, and three possibilities for the point mutations. We already have discussed that, and वो three possibilities क्या थी कि पॉइंट म्यूटेशन है, पीसीआर आर्टिफैक्ट्स हो सकती हैं, एंड कुड बी अरेल म्यूटेशन। सो उसमें जब आप फाइल ओपन करेंगे, सो इन दैट फाइल कुड बी लाइक दिस इज द क्रोमेटोग्राम फाइल। समझ आ रही है? जब आप उसमें ओपन करेंगे तो आपको इस तरह पीक फाइल नजर आएंगी। लेकिन फिंच टीवी का ये जो टूल है वो इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि लाइक यहाँ पे आपने देख लिया कि ये पीक यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है, और आप इस फाइल को यूज करना चाह रहे हैं। सो आप यहाँ से पहले जो है ना, लाइक अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पीक फाइल जो है वो कहाँ से ठीक है, सीक्वेंस कहाँ से ठीक है, तो यहाँ से पहले जो है, यहाँ से ये पीक फाइल जो है, दिस इज नॉट ओके, यहाँ से ये सीक्वेंस ठीक नहीं है। सो फिंच टीवी में जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और ये पूरा डिलीट कर दें, ये रीजन, ठीक है। यहाँ के बाद सीक्वेंस ठीक है। तो अब एक चीज आप ये भी नोट करें कि ये सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 यहाँ पे 10 है, तो इसको गिनकर ये 10 किया, फिर 20, हर 10 के बाद इन्होंने डिनोट किया हुआ है सारा। तो ये 120 न्यूक्लियोटाइड यहाँ तक है, फिर उसके बाद देखें आगे जाके 240 तक है, फिर ये पूरा सीक्वेंस है। तो दिस में बी 1000 बेसिस आर मोर देन 1000 बेसिस, ठीक है। सिंगल सीक्वेंसिंग है तो सिंगल सीक्वेंसिंग में रीड लेंथ तकरीबन 800 900 होती है। सो अब देखें दिस पेज 1 of 2, तो दूसरा भी पेज है। सो ये अब पीक फाइल है, ये अब देखें वो 620 के बाद यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ के बाद देखें ये पीक फाइल खराब हो रही है, ये देखें मिक्स हो रहे हैं सारे। यहाँ पे देखें बिल्कुल सही सही पीक्स आ रही है ना, कि ग्रीन इज फॉर ए, टी इज फॉर रेड, and the other the G is for black is for G, and so on.
अब यहाँ पे देखें ये पीक फाइल ख़राब है, तो हमने क्या करना है, वहाँ पे देखना है कि फॉर इंस्टेंस यहाँ तक पीक फाइल जो है वो मैं कर देता हूँ कि लाइक यहाँ तक जो है दैट इज़ ओके, मैं कंसिडर कर देता हूँ यहाँ तक। यहाँ के बाद ये पीक फाइल जो है दिस इज़ नॉट गुड। तो यहाँ के बाद जो है ये सारा सीक्वेंस जो है वो मैं क्रोमेटोग्राम के थ्रू सॉरी फिंच टीवी के थ्रू ये मैं डिलीट कर दूंगा, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि ये देखें पीक फाइल इज मोर डिस्टर्ब। ठीक है, तो ये मैं डिलीट कर दूंगा, बाकी ये जो है मैं रख लूंगा। तो इसके बाद फर्दर एनालिसिस इसमें होगी। ठीक है, सो यहाँ पे एडिटिंग भी हो सकती है, यहाँ पे टी की जगह मैं सी ऐड करना चाह रहा हूँ तो क्लिक करें, और क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस जब नोट पैड में होगा तो वहाँ पे ये लोकेट करना मुश्किल है। तो फिश टीवी के अंदर एडिटिंग भी होती है, आई विल सेंड यू द एपीआई फाइल, वहाँ पे आपने ओपन कर देना है एंड वी कैन एडिट दैट देयर। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। ओके, एम आई क्लियर टू द होल क्लास? शफीक समझ आ रही है आपको? शफीक आपको आवाज आ रही है? शफीक, मुंतहा मुंतहा आपको आ रही है समझ? निमरा खान समझ आ रही है कि नहीं? कम ऑन। जी सर आ रही है, आपकी आवाज भी ठीक आ रही है। ओके, तो हमजा समझ आ रही है? हमजा नदीम, यस सर। हम क्या पढ़ रहे हैं? सर मेरा अभी अभी मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, कनेक्शन की वजह से मुझे मतलब नहीं उस तरीके से आ रही, तो मैं रिकॉर्डिंग चलूंगा सर फिर। ओके, तो मजीद समझ आ रही है आपको? यस सर आ रही है। ठीक हो गया। एंड निमरा खान, निमरा आशिक समझ आ रही है? निमरा आशिक, सदफ यासीन, सदफ सदफ आपको समझ आ रही है? ठीक है, यू हैव माइक्रोफोन प्रॉब्लम, ठीक है। ओके एंड ओके, जन्नत इम्तियाज, ओके। सो फाइनल में सॉफ्टवेयर देखें, अगर मैं आपको लाइक इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं लेकिन आपने सॉफ्टवेयर को यूज ना किया हो तो उस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आनी। ठीक है, जो आपके स्लाइड्स में लिखा होगा ना, लाइक जो भी लिखा हुआ है स्लाइड में, लेकिन ये सॉफ्टवेयर, ये इससे पहले भी जो सॉफ्टवेयर गुजरे हैं, अगर आपने उस सॉफ्टवेयर को रन नहीं किया हुआ, इवन दो मैं सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं एप्लीकेशन की पूछूंगा लाइक जो स्लाइड्स में है, लेकिन उस स्लाइड का या तो आपने रटा लगाना है फिर, ठीक है, उसको लाइक लर्न बाय हार्ट करना है, रटा लगाना है तो फिर होगा, या फिर आपने उस सॉफ्टवेयर को रन करना है और समझना है, फिर उस क्वेश्चन की आपको समझ आएगी। ठीक है, सो सदफ यासीन, ओके यू हैव प्रॉब्लम। रबिया मुनीर, रबिया रबिया मुनीर इज देयर? यस सर। समझ आ रही है? यस सर। ठीक हो गया। आफरीन अशरफ, सर हेलो सर। जी जी समझ आ रही है?
जी सर आ रही है। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। अभी आप कह रहे थे कि जो क्वेश्चंस होंगे वो आप थ्योरेटिकल बेस पे देंगे या फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे? ये थ्योरेटिकली होंगे, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया होगा ना तो थ्योरी की समझ नहीं आनी, क्योंकि थ्योरी जो है वो उन्हीं प्रैक्टिकल से सारा कुछ होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल कोई नहीं होगा। प्रैक्टिकल की क्लास आपको अलहदा होती है, टीचर भी आपका अलहदा है, तो वो प्रैक्टिकल का आपका टीचर कंसर्न है। बट फॉर थियरी आई विल आस्क इन द थियरी, बट द थियरी अनफॉर्चुनेटली इज डिपेंडेंट ऑन दैट प्रैक्टिकल। आपने अगर इसको प्रैक्टिकली खुद रन नहीं किया हुआ तो आपको उस थियरी के क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। समझ आ रही है? यस सर। और इसको करें बिकॉज रोजाना के बेस पे हमने सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं और भी हमारे पास आगे आने वाली चीजें। ठीक है, सो लाइक अगर आप ये नहीं करेंगे और आप ये सोच रहे हैं कि आपने एंड पे जाके रिकॉर्डिंग सुन लेनी है, रिकॉर्डिंग से आप लोग फिर कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप सारे जो लेक्चर्स हैं और सारे कोर्सेज की रिकॉर्डिंग सुनने बैठ जाएं और उसको प्रैक्टिकली भी करें। बिकॉज इस एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपका सिस्टम पूरा हैंग हो जाना है। इस तरह भी हो सकते हैं, आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा फिर। ठीक है, सो अभी से करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर बाद में आप बर्डनाइज हो जाएंगे। सर हमारी क्लासेस होंगी यूनिवर्सिटी में? ये नहीं पता, कोई श्योर नहीं बता सकते फिलहाल। तो सर ये तो मुश्किल है, इसका मतलब हम इसको घर में करना के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वैसे मुश्किल है। इवन लैब भी हम पूरी पूरी नहीं समझ पा रहे नहीं, कंप्लीटली। असल में तुबा एक बात आप ये अंडरस्टैंड करें, यूनिवर्सिटी जी में ये सॉफ्टवेयर जो आप आईपीसी में भी बैठ जाए ना तो वहाँ भी सॉफ्टवेयर जी। रन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आपके पास अपना सिस्टम होना ज़रूरी है। अपना सिस्टम होगा सर, लेकिन वो मतलब गाइडेंस मिल जाती है ना टीचर के। तो सिस्टम तो गाइडेंस है, हमारे पास लैपटॉप्स हैं। देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम वीडियोस भी चला रहे होते हैं, समझा भी रहे होते हैं, जी और कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट में भी हैं, रिकॉर्डिंग भी इसकी होती है, तो मेरे ख्याल से इसका मसला नहीं है। एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, आपको ईजी होना है। यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह ठीक है होगा, बिकॉज आई थिंक यूनिवर्सिटी में आपका ज़्यादा टाइम लगना है, बिकॉज आने जाने में यहाँ पे टाइम जी जी। आपका ज़्यादा लगेगा। वो घर दूरी है में ये आपको बाद में अंदाज़ा होगा कि हाउ मच यू आर प्रिविलेज एट योर होम्स। ठीक है, जी सर। फीमेल्स का ठीक है नहीं बता सकता, मेल्स तो क्योंकि फीमेल्स ने तो घर के काम करने होते, ज्यादा खाना और किचन काम, सो उसका थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिकॉज आई हैव सिस्टर्स, आई नो कि किस तरह हो सकता जी होता सर। है। सो लेकिन चले, खैर खैर इंशाल्लाह। चले चले। और नेक्स्ट जो है ट्रांसलेट, एक टूल है। ट्रांसलेट में क्या होगा कि इसमें डीएनए और आरएनए सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू हैव अ सीक्वेंस, लाइक अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है और लाइक अ सीक्वेंस इज ए टी जी टी, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, और इसको मैंने इसकी प्रोटीन एम्प्लीफिकेशन, या तो ये हो सकता है कि इस सीक्वेंस को मैं एम्प्लीफाई करूं। ठीक है, एम्पलीफाई करने के बाद ये मेरे पास एम्पलीफिकेशन आ गई है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको क्लोन किया, सीक्वेंस किया, मेरे पास सीक्वेंस आ गया। सो लैब्स में यूजुअली ये होता है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं लैब में हूँ, सो लैब में अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूंगा कि एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं, दिस इज द क्लोनिंग वेक्टर, इसके बाद एक्सप्रेशन वेक्टर होगा, इसमें मैं एक्सप्रेस करूंगा इसको। जब एक्सप्रेस करूंगा तो लैब में मैं इसको बैक्टीरिया के अंदर इसको एक्सप्रेस करवा सकता हूँ। सो आई गेट द प्रोटीन सीक्वेंस, so I get the sequence of the protein, so and I get the sequence, I get the protein sequence. So मेरे पास proteins, I got this protein sequence, ठीक है, in expressing in vitro, ठीक है, so in vivo.
सो अब मेरे पास बैक्टीरिया में एक्सप्रेस हो गए और वहाँ से मैंने प्रोटीन को आइसोलेट किया। प्रोटीन को आइसोलेट करके मैं इसको प्यूरिफाई कर देता हूँ, आई गॉट दी प्रोटीन सीक्वेंस, और उसको फिर मैं HPLC पे इसकी प्यूरिफिकेशन कर सकता हूँ, या जो भी है, ठीक है। सो या डायलिसिस करने, ओके। सो आई गॉट थ्रू दिस होल प्रोसीजर, बट if I only has this sequence, अगर मेरे पास ये सीक्वेंस है और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस सीक्वेंस का प्रोटीन सीक्वेंस किस तरह आएगा, लाइक क्या सीक्वेंस होगा, आर आर्जिनिन, मेथियोनिन और इस तरह का सीक्वेंस हो, मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये सीक्वेंस है। तो देयर आर सम इन सिलिको टूल्स, कंप्यूटेशनल टूल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, लाइक टू ट्रांसलेट DNA RNA सीक्वेंस इनटू अ प्रोटीन। तो हमारे पास ये ट्रांसलेट टूल्स हैं, क्लिक करें इसको एंड यू विल गेट दैट। नूरीन, यस सर। ये साइट क्लिक करें, इसको थोड़ा सा देख लें, सर एक मिनट में को ओपन करती हूँ। ओपन करें। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? जी प्लीज कर दें। हो रही शेयर? ये दोबारा शेयर कर दें, आपकी स्क्रीन मेरे ख्याल से नहीं है। जी हाँ, हो गया, ठीक है। सो दिस इज द टूल, ये वन ऑफ द टूल, बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं ट्रांसलेशन के लिए। अब यहाँ पे कोई सीक्वेंस लिखें, ये प्लीज एंटर अ DNA, यहाँ पे लिखें ATG TGA C, हाँ ठीक है, CTTGA, ठीक है, लिखें कुछ भी, कोई भी सीक्वेंस, हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर आपके पास कोई इस तरह और आखिर में TAG लिखे, अब कोई भी सीक्वेंस तरह मौजूद है, बस बस ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आउटपुट फॉर्मेट्स में देखें, इंक्लूड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इंक्लूड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, नो स्पेसिस, ठीक है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों, एंड अब ट्रांसलेट को नीचे क्लिक करें। ओके सर। हाँ चलो ठीक है। सर ये हो गया। नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए इसको, हाँ ये देखें, ये प्रोटीन सीक्वेंस आ गया आपके पास, ये MLWTF, दिस इज अ प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है। अब ये देखें फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, ये सारे दिए हुए इन्होंने, ये डिफरेंट फ्रेम्स हैं, ओपन न्यू फ्रेम्स। सो इन्होंने रिवर्स से भी, ये आपके पास 6 फ्रेम्स आएंगे, इन्होंने जो दिया हुआ है ना, ये 6 फ्रेम्स हैं। सर ये ओपन रीडिंग फ्रेम रेड में हाईलाइट हुआ है। ओपन रीडिंग फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, ठीक है। और उसके बाद ये देखें 5 to 3 प्राइम है, 5 to 3 फ्रेम 1, 5 to 3 फ्रेम 2, 5 to 3 फ्रेम 3, और नीचे जो है वो 3 to 5 मीन्स के दोनों ओरिएंटेशन, 3 to 5 फ्रेम 1, 3 to 5 फ्रेम 2, 3 to 5 फ्रेम 3। तो अब अनशेयर करें, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि है क्या।
हाँ, अब इन्होंने क्या किया है कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और उसमें क्या होगा कि वो न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 से काउंट करेगा, तो ये एक फ्रेम होना है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 से काउंट करेगा तो ये फ्रेम 2 हो जाना है, और न्यूक्लियोटाइड नंबर 3 से काउंट करेगा तो दैट इज फ्रेम 3। 3 फ्रेम्स हो गए, कोई भी कॉम्बिनेशन और नहीं हो सकती है, 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब लास्ट वाले से काउंट करेगा इस डायरेक्शन में, सो ये अमीनो एसिड डिफरेंट होंगे। अब यहाँ से एक के बाद फ्रेम 2 और फिर सेकंड के यहाँ से के ये फ्रेम 3, तो ये 3 फ्रेम जो है, दिस इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। सो ये 6 फ्रेम जो है, दे आर द पॉसिबल फ्रेम्स इन दैट केस। लेकिन नॉर्मली जो ATG है वहां से शुरू होता है एंड देन द प्रोटीन इज देयर। एम आई क्लियर टू द क्लास? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक हो गया, ठीक है। web page and show this to us. ओके सर। Thank you. सर आप अलाउ कर दें मुझे। जी please wait for a while. जी now you can share. जी, this is a translate tool. Write some sequence like ATG, जी। TAG, and like TCA and some sequence like that. It's true. Yeah. And सर ट्रांसलेट कर दूं? CTA आखिर में, like in the last you should write CTA, CTA, CTG. Sorry, it should be sorry ATC. सर आप ट्रांसलेट कर दूं? Yeah, translate. So it's giving the like if you can see, so move a bit up, scroll up, yeah, it's okay, it's okay, yeah. If you can see ATG, so ATG is a methionine, and after that there is a TAG, that is the stop codon. TAG is a stop codon. So if we start from the start, that is ATG, that will be methionine, that will be a start codon, and that is a T, then is a TAG. So if it goes forward direction, in the forward direction, so scroll it down please. So now you can see M, and after M this is a stop codon A. So that is a stop codon, and after that there are codons. So and 5 to 3 frame, like frame 2 is, it will be like if you can scroll up, CRG is the frame 2. So this 1A will not, the A will not be considered, and after that TGT will be considered, and so on. So if you can see the in the second frame, stop codon is not considered because it goes one nucleotide forward, and from there the amino acid is being considered. So check the third one. So scroll down. Yeah, this is the third one, and same is for the reverse frame. So like the 3 to 5 frame 1, and that is and then 3 to 5 frame 2, and so this is in the reverse direction. So we have given in the options, please scroll up. Yeah, and if you can see this DNA strand forward and reverse, both options are like they are ticked, and they are like active. So this will translate in both directions. If you need in only a single direction, so that can be done. Also, it includes
the other options like DNA includes nucleotide sequence, no spaces, and so on. And if you can click the standard, the arrow with the standard, yeah, click this. Okay, so uh, in mitochondria, normally the codon is are different. That they code for different amino acid. Like there are different amino acid for the start codon. So start codon in the mitochondria is not always the ATG. So if you have mitochondrial sequence, click the vertebrate mitochondrial sequence or yeast mitochondrial sequence, so that will be different. So click vertebrate mitochondrial, yeah, click that and now translate. And scroll it down, so it's again the same. So it's again the same. So if, other amino acids, other codons could also be start codons in mitochondria, but here actually the sequence is smaller, so we cannot see that in that sense. But we need to have in mind that in mitochondria there are different start and different codons for the amino acids. That's not the same as for the nuclear genomes. Am I clear? Okay, and if you can unshare your screen so that I can share the slides. Thank you. Okay, so this is actually the translate tool, and that will convert DNA and RNA sequence into a protein sequence. And next is, what about the sequence length? So how we can determine the sequence length? And that is, for example, if we have 606 nucleotides, so how much will be the amino acids? And that's simple, 606 divided by 3, because 3 nucleotides combine together to form one codon, and that codes for an amino acid. So that will equals to 202 amino acids. So that means 606 nucleotides will be equals to 202 amino acids, and you know better than me. And what about the molecular weight in kilodalton? What about molecular weight? So an average molecular weight, so check it. An average molecular weight is of an amino acid is 110 daltons. So you should keep in mind that an amino acid weigh about 110 daltons. So if a protein with 64 kilodaltons equals 64,000 grams per mole. So that means 64 kilodaltons will be equal to 64,000 grams per mole. So, and to calculate molecular weight of a specific protein, try this sequence. So please, Noreen, check this site, and we will check this later. Sir, Okay, and molecular weight is required to predict the location of a protein of interest on the gel, and a dimeric protein will have double the size of monomeric form. Who will explain this first? I need someone to explain this, and we will talk in detail about this. This has some complexities. I want to go into detail. But before that, I want your opinion. So मैं You want बताऊं? to discuss it? Yeah, please. सर इसमें हमने सबसे पहले एक टूल चेक किया जिसके अंदर हम अपनी डीएनए या आरएनए का सीक्वेंस दे देते हैं, तो वो उसके बाद उसकी प्रोटीन सीक्वेंस दे देते हैं। उसके अंदर हमने 2-3 फॉर्म देखे गए। अगर फर्स्ट इट कैन बी चेंज फ्रॉम अ माइटोकॉन्ड्रियल, कि अगर हम सीक्वेंस जो दे रहे हैं अगर उसको हम वर्टिबल माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर चेक करेंगे तो मे बी जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वो कोडिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है। इसके बाद हमने सीक्वेंस लेंथ देखी है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के अमाउंट हमें पता हो तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोटीन की लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल इज डैट के हम न्यूक्लियोटाइड को मतलब को डोल लेंथ यानी 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अमीनो एसिड्स आ जाएंगे। और इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
प्रोटीन तो हम जो एवरेज जो मॉलिक्यूलर वेट है एक अमीनो एसिड का वो 110 डाल्टन कहते हैं। तो अगर जितने हमारे पास टोटल अमीनो एसिड इन सीक्वेंस होंगे हम उसको 110 के साथ डाल्टन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन कैलकुलेशन करके मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना इसलिए नेसेसरी होता है कि ताकि जब हम अपनी प्रोटीन को सेपरेट आउट करें डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड्स, तो हमें पता हम जो हमने साइड पे अपना जो लैडर या स्केल होगा उसके ऊपर हम उसके इक्विवेलेंट रख के अपनी प्रोटीन को इल्यूट कर सकते हैं या लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और सर इसके अलावा जो डायमेरिक प्रोटीन है उसको डबल इन साइज होती है मोनोमेरिक फॉर्म। Great, great. And like if I could explain this, so what we do actually in the lab, like if we did a PCR of a DNA and our RNA, so what we do, we do use two primers. We amplify a sequence, and after amplification, we got different like amplicons. So we run those amplicons on the gel, and we already know the size of these amplicons. So so we actually know the size of these amplicons. Say for instance, this is 1 kb, 1 kb size. So 1 kb is the size of the DNA. So what we do actually, we do run this on agarose gel, and we run a ladder and in the well, in one of the well, and like if this is like if this is 1 kb size on the ladder, so our DNA, like this PCR product, if we run the same PCR product on the gel, it will be equivalent to this one. So it will be like on the front of this one. So this size could be comparable with this one. So so this means our like amplicon is correct on its size. We sequence it, and after sequencing, we need to like if we need to clone this in some vector, so what we do, we actually have a plasmid, and that plasmid, on that plasmid we clone this, like if this sequence is like this. So sorry, if I could make it differently, like if I draw it. So I need to clone this on a plasmid, and in there, in that plasmid, like I have cloned this DNA in this plasmid. So after sequencing, I got to know the sequence of, I confirm the sequence, and then after that, I clone this in some plasmid. After cloning in the plasmid, I need to express that. I actually, what I need is to have the protein sequence. Like I want to have the protein sequence. So if I want to have the protein sequence, what I actually do is to, like if this is the protein sequence of that, but actually I don't know the protein size. Actually, only I know is the size of the DNA. So what I can do, arbitrarily, one 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 amino acid is equal to 110 daltons. So one amino acid is equal to 1 dalton. If that amino acid is in, if that amino acid, if that amino acid is in a polypeptide chain, this is important. So 110 Dalton if that amino acid is in a polypeptide chain. Why this is important? Normally, one amino acid is equal to 128 Daltons.
And this 128 daltons, that means when one peptide chain is when occurring, this peptide chain is like this image, and the release of one water molecule is obvious. One water molecule release when a peptide chain is formed. So water molecule is equal to water molecule is equal to how much? Its molecular weight is 18. So 128 minus 18. So that will be equal to 110. So if an amino acid is in a peptide chain, that will mean that amino acid has a molecular weight of 110 dalton. So if I have 1 kb size of the amplicon, that will mean that is 1000 bases, and that 1000 bases means divide by 3 will be equals to the number of amino acids. So in those 1001 will be the stop codon. So that will mean, so normally what we will get 333 amino acids. So 333 amino acids will mean we will multiply 333 amino acids into 110, and that will give us a value, and that value will be in the dalton. So simply multiply that value with 1000. Sorry, simply divide that value by 1000, and we will get what? We will get the value in kilodalton. Am I clear? So if I get 30 kilodalton or 10 kilodalton, so now I have got the expression of this protein in an expression vector. What I do run the same on an acrylamide gel, a polyacrylamide gel. If I run that, I will have the protein ladder, and if I run the protein on this gel, I will get a size of the band. But how I could determine this bands from this DNA sequence? Simply multiply that with 110, and by multiplying that with 110, that will mean in the Dalton, and after that in the Dalton multiply that, divide that by 1000, that will give rise to 1000, that will give rise to the kilodalton. And if we run that on a gel, we can assume the size of our band. Otherwise we don't know what will be the size, because we either this size could be correct or wrong. So I have to assume some size from the sequence, from the DNA sequence. I can assume the size of the protein. So after that, if this protein is a dimer, so that will mean if this size is, say for instance, this is 20 kilodalton. So if this size is 20 kilodalton, and if I get a protein and that is at 40 dalton, at 40 kilodalton, so at 40 kilodalton, what this will mean? So that will mean the protein is a dimer, two proteins combined together, and if we run that, so the two proteins will be combined, and we will get a band at what? At 40 kilodalton instead of this 20 kilodalton. We got 20, but actually the protein was a dimer, so that give rise to 40 kilodalton rather than 20. So we have to have it in mind, so that it can happen. The dimer could happen, a trimer could happen, tetramer could happen. So this is what it says about it. Am I clear or not? Yes. So, and one more thing we have to keep in mind, that if we have a sequence of amino acids, and there is like M, G, T,
MGX, like these are multiple of the amino acids. So these amino acids, so what could be the size of this amino acid, these amino acid and the peptide chain, what could be the size? So keep in mind, don't simply count these amino acid and multiply that with 110. Don't do it. If you want to have some idea, just you can, in that way you can multiply with that. But for to get an actual size, if you want to get an actual size, the actual size, so for actual size, don't just multiply this with 110. And the reason behind is the different amino acids have different sizes. This 128 Dalton means, what this means, actually the actual size of of all 20 amino acids has been taken, and those were divided by 20 to take an average size of an amino acid, and that is 128. But actually in a sequence there may be stretches of amino acids that are same, like say for instance glycine is a small amino acid. So if the protein, if the peptide has more glycine, that will mean the actual size will be less. Similarly, if the protein has some amino acid, that the size of that amino acid is more than the other, and that amino acid is frequently present in the peptide, so the actual size will be more than what we actually assume. Am I clear or not? Yes. So we need to have some site from where we could get the actual size of our polypeptide chain. So for that, what we do actually is we have we have this tool available, web page, this site available. Go on to this site and paste a sequence of amino acid there, and it will give us the actual size of the polypeptide chain. Am I clear or not? Yes, sir. So Noreen, can Yes, sir. you share the Yes, site? sir. Okay, Sir, ये आया. wait. Okay, and this is actually the protein molecular weight prediction. And okay, this is a sample sequence. Just click submit. And this is actually 2.4 kilodaltons now. Yes, sir. Sir, Yes, that's good. So this is the actual size of the amino acids. If you can click back, sir, यहाँ एक minute. okay, the previous window, click the previous window. I think, yeah, this one. If we could count these amino acid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So these are 20. So if we could multiply this with 20, 20 with 110. So just multiply 20 with what? 110. 20, just a second, sir. 20, 110. Sir, 2,200. And divide by 1000. 1,000. 2.2. 2.2, and click the output window now. So we have assumed 2.2 kilodaltons. What if we multiply that with 110? But in the actual size is 2.4 kilodalton rather than 2.2 kilodalton. This is what makes the difference actually. Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. Okay. Who will explain? Nohin, if you can unshare your screen. Thank you. And so now who will explain?
Okay, who will explain now? Alisa. Yes, sir. G, explain this slide. I want some point of view from you. एक ट्रांसलेट में होता है और उसके लिए वो आपने लिंक बताया था वहाँ पर जाके ट्रांसलेट हो जाता है डीएनए और आरएनए का सीक्वेंस प्रोटीन सीक्वेंस में और सीक्वेंस लेंथ के लिए सर आपने ये बताया था कि जो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उसकी मतलब 606 न्यूक्लियोटाइड है तो अगर हमने फिर अमीनो एसिड्स के बारे में पता करना कि कितने हैं तो हम उसको 3 पे डिवाइड करते हैं और सर आपने मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताया था कि किलोडैल्टन में किस तरीके से मतलब हम पता कर सकते हैं तो सर उसके अंदर सर बस इतना ज़्यादा चीज़ समझ आता है बाकी बस यही समझ नहीं ठीक हो गया फाइका Yes, sir. फाइका I want to make myself sure that everybody could understand. Please if you can explain the slide. सर इसके अंदर आपने सबसे पहले हमें ये बताया था कि जिस तरह हम डीएनए या आरएनए लेते हैं जो कि पीसीआर प्रोडक्ट वगैरह के थ्रू हम लिया जा सकता है उसकी अगर हमने सीक्वेंस लेंथ निकालनी हो तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है कि हमें पता है कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर टोटल 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए तो उसको अगर हम टोटल न्यूक्लियोटाइड्स को 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं और जब हमने इसका डाल्टन में निकालना हो तो उसके लिए भी हमें पता है कि 110 जो है डाल्टन होते हैं वो एवरेज में एक अमाइनो एसिड के अंदर तो हम इसको 110 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डाल्टन में आ जाता है और जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वो किलो डाल्टन में चला जाता है इसके बाद आपने हमें बताया था कि जो प्रिडिक्टेड होता है वो कभी एक बार एक्चुअल से वेरी करता है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स वगैरह होते हैं जो कि हम यूज करते हैं जिसमें कि अभी हमने कौन सा यूज भी किया था बायोइन्फॉर्मेटिक्स एसएमएस प्रोट उसके अंदर आ जाता है और सेकेंडली आपने हमें एक और बात बताई थी जिसमें यह था कि मॉलिक्यूलर वेट को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोफेरोसिस टाइप वो चार्ट होता है जिसके अंदर हम जेल की लोकेशंस के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर साइज है क्या इसके अलावा आपने हमें ये भी बताया था कि जो एक प्रोटीन का डाइमर होता है इसका जो एक्चुअल साइज होता है वो एक जो मोनोमर वाला यानी कि जो एक सिंगल फॉर्म होती है उससे डबल होता है ठीक हो गया. Okay, and next is oligonucleotide calculator. We have a calculator, and if we have a primer, we can calculate the properties of that primer by using this tool, and we can calculate the length because if the primer length is longer, so we can calculate the length. We can calculate the molecular weight of that primer sequence, so we can determine the molecular weight. We can calculate the GC content, the percent GC content. We can calculate that. We can know the hairpins if either the primer has hairpins or not. So this is important. We don't need to have the primer with hairpins, so it will determine the hairpin. Self-dimerization. So self-dimerization is also important. So either the primer is self-dimerizing or not, and reverse complement. So these are the properties, some of the properties that the primer will give. So like if we have a primer sequence, so we want to check what we want to check the length of that primer. We will want to check the molecular weight of that primer. We want to know the GC content of that primer. We want to know either the primer is making a hairpin or not. So it should be discouraged if the hairpins are more. Like if we have a primer and it has more hairpins. So and if we have a primer and that primer dimerizes, so if they are dimer self-dimerizing, so sorry, it's not like that. This is the hairpin. Like if we have a primer and it dimerizes with another primer with the same primer, so if it is just like how it dimerizes is just like this. If we have a primer and that primer is this region is complementary to this region. So if this region is complementary to this region, if we have this sort of primer, what will happen? So it could happen that the other primer will dimerize like this.
it could dimerize. So the dimer could form, it could self-dimerize, or it could cross-dimerize, or like if it could made hairpin structures. So these could hairpin structures could be made. This dimerization could be made. So self-dimerization means the same primer dimerizes. Cross-dimers mean the forward and reverse primer, the two different primers, they become dimers. So they stick together, and now these two primers are not available for the DNA to work as forward and reverse primers, because they dimerizes with each other rather than binding here with the DNA sequence. So the different types of dimerization could happen. The GC content is important. If the GC content is more, we need to have more energy to, like if the GC content is more, we need to exert more energy to denature the sequence from this strand to break the hydrogen bond. So more will be the hydrogen bonds, and more energy will be utilized to break this hydrogen bond. So self-dimerization could happen, cross-dimerization could happen, and reverse complement. If we need to know the reverse complement of a sequence, so we can use this tool for reverse complement to know the reverse complement. In some cases, we need to know the reverse complement as well. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Good. Next to it is uh, primer dimer. So a potential primer dimer could be a potential byproduct of a PCR. Primer sequence are hybridized to each other due to their complementarity. So we need to avoid these things, and the DNA polymerase actually amplifies the primer dimers, leading to a competition for PCR reagents, thus potentially inhibiting the amplification of intended DNA sequences. So if we could know like how the primer dimers actually they occurs. So if we have a forward primer, if this is a forward primer, and if this is a forward primer, and if we have another sequence and that is the reverse primer, and somehow these two primers has two or three nucleotides at their 5' end. This is actually the reverse primer. I could write it here. So somehow there is complementarity of both primers at their 5' ends. So what will happen? The polymerase will amplify the sequences like this. The polymerase will amplify this sequence here from this side and this sequence from this side. Now, rather than amplifying our DNA, like if we have a DNA sequence, rather than amplifying that DNA, now the PCR is amplifying this product. So the PCR is amplifying primer dimers, and we don't need primer dimer. We don't want actually primer dimer. So this primer dimer, so we will get the primer dimers, and this primer dimer is actually the byproduct of the PCR. We actually don't need primer dimers.
So before going into the PCR, we need to know either the primers that they will give rise to the primer dimer or not. So we have tool available in silico tool available, and we can check those for the hairpin, for self-dimerization, for the GC content, and for the reverse complementation. For the reverse complement, we can use this tool. So if Noreen is there, please share the slide. Yes, sir. ये साइड खोलनी है. G, please. This slide. When you are done, let me know. Yes, sir. सर हो गई ओपन. आप G, देख please लें. share now. Full screen कर लें. नहीं, ये साइड नहीं है. ये सर ये लिखी थी मैंने. Okay, so synthesizer, custom oligos. Oligo calculator है third one. सर दिस वन. This one, yeah. Exactly. यहाँ पे कोई सीक्वेंस लिखें. More sequence, more. Yeah, that's it. Now click calculate. जी. So अब यहाँ पे देखें, नीचे रिवर्स कॉम्प्लीमेंट का सीक्वेंस आ गया है. ठीक है, नजर आ रहा है ना? यस सर ये वाला. ठीक है, दिस वन एग्जैक्टली. और यहाँ पे देखें, लेंथ जो है 26 है. फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जो है 26 इज अ लेंथ. जीसी कंटेंट देखें is 38% is the GC content. Molecular weight जो है वो 8040. So GC content के बारे में normally आता है कि we need to have the GC content from 40 to 60%. So that is below 40, but it's near 40 is okay. So GC content है, and rest is if you want to know the self complementarity, either the primer will self complement or not. So click this check self complementarity. Yeah. So you can see like no potential hairpin, potential here, there will be no hairpin, and that's great. 3' complementarity, no 3' complementarity, all potential self annealing, there is no. So that's best. That's the best primer if you could check only these properties. Am I clear? Yes. Okay, so now please unshare the slide so that I could share. सर Ji, Shafiq. सर जो कॉम्प्लीमेंट्री हेयर पिन लूप जो बनते हैं सर, वो इस स्पेसिफिकली वो तब नहीं होंगे जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा प्राइमर के अंदर. Exactly. अगर वो सीक्वेंस मौजूद है तो it will have to make dimer भी बनाएगा, hair pin भी बनाएगा अगर palindromic सीक्वेंस है. Exactly, you're ओके. right. Okay, and like that will be like this. If we have a sequence और उस sequence में एक और sequence मौजूद है जो इसका complementary है और इसका opposite है. So it will make a sequence. It will be like this. ये इसका complementary है तो इसको it will be like this. So ये इसका complementary होगा. So it will bind with because it's a complementary and reverse complement होगा वो. तो वो हेयर पिन बनाएगा. ठीक है, बाइंड करेगा दूसरे के साथ. So and next is like if you could see this, this is actually a diagrammatic representation. Primer dimers are amplified in 3 steps. 2 primers in the first step, 2 primers anneal at their respective 3' ends. And if that is high GC content, अगर GC content यहाँ पे ज़्यादा है, so they will bind more with more strength.
because there will be more hydrogen bonding. So now in the next step, what will happen? The DNA polymerase will bind and extend these primers according to the complementarity of the sequence. So it will amplify this sequence in both directions. Now at the third step, when single-stranded product, now this will release the denaturation step, and that will be like this, and this primer will again bind with this, and it will amplify the other side of the primer. So this will, what will it will do? The third step occurs when a single strand of the product of step 2, this step 2, is used as a template to which the fresh primer anneals, leading to the synthesis of more primer dimers, and that's it. So for next is how to find open reading frames. If we have a sequence, we want to know either in that sequence is a potential candidate for protein amplification or not. Either that sequence will produce protein sequence or not. So how we could know? And so where could be the open reading frame? You know better even than me that what is open reading frame, the difference between open reading frame and a CDS. So we can find open reading frame within the DNA sequence, and we have some online tools. And this online tool, this is from the NCBI, and that is Open Reading Frame Finder. And to confirm selected open reading frame, what we do, actually there is a blast option available there. Just click on the blast, and it will that open reading frame will be like identified. Either it is an arbitrary open reading frame, or it is an actual actual open reading frame, and annotate correct open reading frame within the DNA sequence. So if we have a DNA sequence and we got it sequenced from some sequencing facility, we want to submit that sequence to the repository or the DNA bank. So what we actually need to do is to actually annotate that sequence. We want to know either what could be the open reading frame. So with this open reading frame finder, we can know the open reading frame within this sequence. So we need to actually identify this sequence with the start codon, with the stop codon, and to know the actual open reading frame. So we need to locate that open reading frame. So we have this tool available. So Noreen, your turn now. Yes, sir. Let me check. तो ये Wait, अभी शेयर कर दें जी. Yes, exactly. Write some sequence over there. सर फास्टर सीक्वेंस चाहिए, फास्टर फॉर्मेट में चाहिए. ठीक है, कोई मसला नहीं, आप लिखें. फास्ट ए फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करेंगे? ग्रेटर देन का निशान लगाएं, सिंबल ऑफ ग्रेटर देन. नो, दिस इज लेस देन. सॉरी. बस ठीक है, ठीक है. सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि दिस इज नॉट एक्चुअली द फास्ट ए फॉर्मेट. आप ये ग्रेटर देन के बाद जो है क्लिक करें. ग्रेटर देन के एनसीबीआई बाद से ले लेते हैं फास्टर. नहीं नहीं नहीं, यही ठीक है, यही ठीक है. ग्रेटर देन के बाद क्लिक करें, एंड यहाँ पे लिखें नोरीन. ठीक हो गया. एंड इंटर प्रेस करें, प्रेस इंटर. या
अब देखें, और ये जो ग्रेटर देन के निशान और आपके नाम में स्पेस ना हो, रिमूव द स्पेस. Yeah, this one. Yeah. So in the first line, there will be this symbol, and after that symbol, you need to paste the sequence, the name of that sequence. Okay. And in the second line, the sequence should be there. So this is actually fast A format. Okay. अब नीचे जाए, scroll down and click submit. Short. Okay. Like इसके साथ कोई और sequence add कर लें. मैं खुद से कर लूं कि एनसीबीआई कुछ से भी ले कर लूं? लें. नहीं, कुछ भी कर लें. इसको कॉपी करें और पेस्ट करें वहाँ आखिर एंड पे फिर दोबारा इस सीक्वेंस को कॉपी करें. यस, कंट्रोल सी एंड एंड पे पेस्ट करें. ठीक है. अब सबमिट सबमिट कर करें. दूं? जी जी. वेट. So अब इसमें it find out two operating frames. They shown in red color. The operating frame 1 and operating frame 2. So these two operating frames are there. The window near on the right side. Yeah, the operating frame. Click operating frame 1. Yeah, यहाँ this पे one. यहाँ पे नीचे वाला operating frame 1 को click करें. इसको click करें. Now इसको दोबारा, हाँ. Now you can see. This operating frame 1 has stop codon start at 1 and it stop at 78. Operating frame 2 को click करें. So it is at 71 start है और 193 पे stop है. अब एक काम करें, scroll down करें और यहाँ पे स्मार्ट ऑपरेटिंग फ्रेम 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे स्मार्ट ब्लास्ट लिखा हुआ है. आई वांट टू नो आइदर दिस इज एन एक्चुअल ऑपरेटिंग फ्रेम और नॉट. टू डू स्मार्ट ब्लास्ट. दोबारा कर रहे हैं. दोबारा हो गया. Smart blast found no matches. That will mean that operating frame is an arbitrary operating frame. That is not an actual operating frame. Okay? So we need not to consider that operating frame. ठीक है. अब वो ऑपरेटिंग फ्रेम 1 को क्लिक करें. नहीं, operating frame 1. Yeah, this one. Yeah. And now smart. Yes, yes. So again, no matches. So that means both these operating frames are not the actual operating frames. Yes, sir. ठीक है. So that's how we can find out which operating frame is the correct operating frame and the actual operating frame. Am I clear? Yes, sir. So please unshare the slides so that I could share with you. And
So search the operative frame in the DNA sequence, confirm selected operative frame with blast search, annotate correct operative frame within the DNA sequence. If we got the operative frame, we can annotate, we can identify the correct position of that operative frame within our sequence. And next to it is Mfold. This Mfold is actually messenger RNA, like do have, normally messenger RNAs do have more than just carry information. They have more function, more diverse in function. And they do carry, and they do encode, and they do have more secondary structures, and can those structures can be used in part to explain the translation controls in the messenger RNA and the replication controls. So they do contain translation controls and replication controls. If we talk about replication control, that usually occur in single-stranded RNA viruses. So the secondary structure in that sense are important in the context of translation control and replication control. So how we can determine the secondary structure of an RNA? So please, Noreen, if you could go on to this site. Yes, sir. सर मैंने अब देखी इनमें से कौन सा है सर? इसमें ये UNA फोल्ड कर रहे हैं. ये फर्स्ट one, yeah, click that. This is discontinued. Okay. The second one को click करें. Mfold BioTools. Yes, exactly. तो ये स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन को क्लिक करें. RNA prediction. RNA prediction. First one, RNA prediction. First one. नहीं यहाँ है इससे नीचे. Second panel में, yes. ये भी Exactly. No, एक काम करें, ये साइट इसको बैक दोबारा गूगल उस पे जाएं. नहीं इसी तरह इसको बैक स्पेस करें, बैक स्पेस. Yes, exactly. Mfold RNA. Yes, this third one, this one. इसको क्लिक करें. ये जो ऊपर साइड दी हुई है, यस. इसको करके देखें. इसको करके देखें. नीचे जाए. Scroll down. इसमें नहीं है, ऊपर जाए. हाँ, Mfold ऊपर लिखा हुआ है. Mfold नहीं यहाँ नहीं, इससे ऊपर. हाँ, इसको क्लिक करें. एरो को कहाँ? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, व्यू, रिजल्ट्स. एप्लीकेशंस को क्लिक करें. नीचे एप्लीकेशंस. RNA fold form, yeah, second one. हाँ, यहाँ पे अपना सीक्वेंस पेस्ट. यहाँ पे कोई सीक्वेंस लिखें. नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे सीक्वेंस नेम लिखें. कोई भी नाम लिखें. अपना नाम लिखें. यस, यहाँ पे सीक्वेंस. इसको कॉपी करके पेस्ट करें दोबारा.
नीचे जो है बस ठीक हो गया। अब यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट आउटपुट नीचे जाए, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन scroll down and yeah, click fold RNA. Scroll down. Okay, so click the structure 1. This one, structure 1. This is the structure that it gives. Click backspace, click करें backspace. ऊपर जाए, scroll up. Download folding. Wait. नीचे download folding है, नीचे जाए. ये फाइल फॉर्मेट्स में एक मिनट क्लिक करें ऊपर, फाइल फॉर्मेट्स में पीडीएफ को क्लिक कर लें या जेपीजी को क्लिक कर लें, ये दिस वन, इससे ऊपर दिस वन क्लिक जेपीजी नहीं ऊपर जेपीजी, ये सर जेपीजी या पीएनजी को कर लें, पीएनजी इसको चले, ये भी ठीक है, ठीक हो गया। ये क्लिक करें, क्या आ रहा है, दिस इज एनर्जी प्लॉट, ठीक है, एनर्जी प्लॉट आ रहा है कि हाउ मच इज द एनर्जी एंड ओके, इसको बैकस्पेस क्लिक करें, नीचे जाएं, I want structure, this is the energy plot, computed folding, so download all folding, okay, and यहाँ पे जी all foldings को click कर लें, individual structures, स्ट्रक्चर 1 के नीचे sorry structure 1 के नीचे लिखा हुआ है, जी exactly, you're right, PNG को क्लिक करें ऊपर, PNG, हाँ PNG, इसको क्लिक करें, शफीक थैंक यू। और ये देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर नाउ, ये देखें, ये उस सीक्वेंस का स्ट्रक्चर आ गया कि हाउ इट फोल्ड्स एक्चुअली इन द सेल। एक्चुअली ये जो आरएनए होते हैं ये सेल के अंदर लीनियर नहीं होते, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में होते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ आवर इनपुट सीक्वेंस एक्चुअली, एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, यू कैन डाउनलोड दिस सीक्वेंस एंड प्ले अराउंड। जी पूछे सर। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर में यू के साथ 60 लिखा हुआ है, ये एंगल्स हैं, क्या हैं 60 20? ये नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये नंबरिंग है ना कि 1 से शुरू है, तो ये 40 वाला सॉरी ये 80 नंबर न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे 1 देखें, 1 कहीं लिखा होगा या 10, ये 40 नंबर न्यूक्लियोटाइड आ गया, नीचे जाएं और दिस इज 20, दिस इज स्टार्ट, दिस इज द स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट है और ये दूसरा एंड है 5 to 3 है ना, तो एक से यहाँ से स्टार्ट है, ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड इज द स्टार्ट, ये एंड सीक्वेंस है ना, और दूसरा स्टार्ट है फ्रॉम द स्टार्ट 20 फिर 30 फिर 40, और इस तरह ये डिनोट किए गए हैं कि ये सीक्वेंस इस तरह है और फिर एंड तक आ जाता है सीक्वेंस, ठीक है। तो एक ही सीक्वेंस है और इसमें फोल्डिंग है सारी, एम आई क्लियर? यस सर। ठीक हो गया। So Noreen, if you could unshare please, thank you। And this was actually about the Mfold, like how it will looks like, and these are some of the examples, these are some of the structures, so this is how it folds, how the RNA folds. Same is for the DNA. Recombination is also important, and people do want to know the genetic recombination within a sequence, like to know the history of a sequence and to know what happened actually to a sequence. Like if I have a sequence and like if it is like that sequence, and like if this is HCV sequence, and some of the part, like if this is HCV sequence from, this is from US strain,
and this one is Australian strain. So people will will want to identify the actual, like we have just a sequence and we don't know why this sequence is different, why the pathogenesis is different, or why the features of the sequence is different. So through genetic recombination, through genetic recombination analysis tools, we can identify which of the sequence is taken from some other sequence. Like if we have some other isolate, so so that means this sequence is taken from this parent, and the rest of the sequence is from this parent. So so that's how these tools are important, and they are giving us an idea of the sequence recombination. Like actually these two sequences recombine to give rise to this new sequence. And actually, genetic reassortment and recombination although contributed to the formation of relatively stable viral genome entries with distinguishable biological properties, create genomes with mosaic multiple features. So this recombination, what it imparts, it imparts distinguished features to the sequences, to the new evolving sequences. Like in the coronavirus, it has been known that a small portion of coronavirus is taken from HIV. So from HIV, a small portion is taken, and this sequence was drawn from this sequence from HIV. So how we can determine that? We have tools available, and those tools, one of the tool is we will be talking about that, RDP4. Second tool we can use is Simplot, and the third of the tool is Plotcon. So we have three different tools. We can use them. We can use them to determine sequence recombination. And the high frequency of recombination occurs maybe as a consequence of mixed infection of distant viruses. So why recombination occurs, as specifically in viruses? So like if we have a cell, and in that cell we have different viruses, like if we have different viruses or different strains of same viruses. So if these are two different viruses, and two strands of these viruses present in the same cell, so what will happen? It will produce they will recombine, and maybe they produce like a sequence like this, like the mosaic like structure. So this sequence is now different from the previously known one, so maybe it's its function is now entirely different. Maybe it provides distinguishable biological properties to the sequence. So recombination analysis is used to identify breakpoints and the hotspots of potential recombination. So it will identify us the breakpoint, for instance, in a sequence, and if there is a small portion of another sequence, so it will provide us the breakpoints, like this is the region where the recombination has been occurred, and this sequence has been now the part of the new sequence. Actually, what happens, like how recombination occurs, how it occurs in nature, how the two sequences recombine. So the two sequences recombine. So how biologically it occurs? So if there are two sequences, one is this sequence and this is another sequence, so how the two sequences combine to form a new sequence? Like how it occurs, like it is, for instance, a new sequence has been formed like this one, and so this is a new sequence. How this formed? So if you can see, this actually could happen with the polymerase.
So if we have a polymerase and that polymerase like scan this genome, so while scanning this genome and while replicating the DNA, or if there is RNA, so when it reach like here, when it reaches here, somehow if these regions are same in the two viruses, so somehow uh, this polymerase switch to this strand, and after switching, what happens after switching, this polymerase comes here and scan this strand, and after that, when it reaches here, it switch again to this sequence, it switch again to this strand, and when it switch to this strand, like now it is here, and then scanning again this strand. So ultimately, if we could draw it, it will make the strand, when the polymerase is going like this, it will make, like, if this is the result of this sequence, now this is the resulting sequence, what will be the resulting sequence when the polymerase is scanning this sequence? So it will move here and it switch here, so the resulting sequence will be like this, and again by switching here, the resulting sequence will be this. So this is how it forms this sequence. Am I clear? Ji, who will explain? सर Ji, Shafiq? Ji. सर एक क्वेश्चन है कि रिकम्बिनेज एंजाइम भी तो वो करवाते हैं रिकम्बिनेशंस जी, ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम ही करवाता है, बिल्कुल। ओके सर जी जी, रिकॉम्बिनेज एंजाइम अगर मौजूद होगा तो वो रिकॉम्बिनेशन करवाएगा। एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन रिकॉम्बिनेज एंजाइम के लिए क्या चाहिए कि लाइक यहाँ पे ये मैंने बात थोड़ी सी स्किप कर दी फॉर लाइक मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था। लाइक ये पॉलीमरेज यहाँ पे स्विच क्यों करेगा? इवन फॉर द रिकॉम्बिनेज एंजाइम देयर इज इन द टू सीक्वेंसेस, दो डिफरेंट सीक्वेंसेस अगर हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 न्यूक्लियोटाइड्स का रीजन जो है वो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे अगर 100 न्यूक्लियोटाइड्स का रीजन कॉमन होगा, कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में ये होता है लाइक हमारे पास एक सीक्वेंस है वो यहाँ तक बन जाता है, फिर स्ट्रैंड स्विच कर जाता है और बाकी यहाँ का पूरा बनता है बस। सो अगर आपका प्रोजेनी जीनोम्स देख रहे हैं तो हाफ ये होगा, ये वाला जीनोम होगा, और ये हाफ जो रेस्ट ऑफ द जीनोम है वो ये होगा। ठीक है। सो डिफरेंट थिंग्स कुड हैपन। रिकॉम्बिनेशन एंजाइम इज डिफरेंट, वो कंबाइन करेगा दो सीक्वेंसेस को, एंड उस रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो हमारे पास फिर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, हम फिर पढ़ेंगे लाइक क्रीलॉक्स पी सिस्टम, एंड देयर आर डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिस्टम व्हिच डू रिकॉम्बिनेशन। ओके सर जो ये हमने एनालिसिस करना होता है तो एनालिसिस में जो टूल यूज करते हैं वो आइडेंटिफाई वो सीक्वेंस करवाता है जहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम या कोई भी एंजाइम ने स्विच होना होता है। जी पॉलीमरेज ने स्विच, यहाँ पे असल में पॉलीमरेज स्विच कर रहा है ना जी, यहाँ जी। ओके सर ओके। और सीक्वेंसिंग तो हमारे पास जस्ट सीक्वेंस आ जाएगा ना, तो सीक्वेंस हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि ये सीक्वेंस बना किस तरह है। So these are the few like things, few ideas like how the sequences could recombine. ठीक है। लाइक हमारे पास मुख्तलिफ वायरसेस में मुख्तलिफ वो आ रहे होते हैं, पार्ट्स आ रहे होते हैं डिफरेंट उसका। लाइक जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है लाइक या मायोसिस के दौरान, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जी एक्सक्यूज मी सर,
सर यहाँ पर ये जो ब्रेक पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ से रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होनी है। एग्जैक्टली। और ये देखा जाता है एक पैटर्न होता है, कुछ खास वायरसेस में एक स्पेसिफिक रीजन पे रिकॉम्बिनेशन हो रही होती है, एंड दोज आर द हॉट स्पॉट्स फॉर पोटेंशियल रिकॉम्बिनेशन। लाइक देखा जाता है कि एक ही रीजन में किसी और वायरस का पार्ट आ गया है, उसी रीजन में किसी और स्ट्रेन में किसी और डिफरेंट वायरस का स्ट्रेन आ गया, तो इसका मतलब है कि दैट पार्ट या दैट रीजन इज अ पोटेंशियल हॉट स्पॉट फॉर द रिकॉम्बिनेशन। ओके, अभी तक जो हुआ है, who will explain? अपने वर्ड्स में अगर कोई बता सके रिकॉम्बिनेशन के बारे में, प्लीज कम ऑन। सिपका है, सिपका शाहिद। जी बताएं। सिपका नहीं है। ओके, एंड फरीन पुरन। She is not zero actually. Okay, and Maida Asghar. उसामा बता दें, उसामा। उसामा, कैन यू हियर मी? जी सर। जी बताएं अभी तक जो हुआ ये रिकॉम्बिनेशन के बारे में। सर इसके अंदर सर आपने बताया कि जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट और रिकॉम्बिनेशन सर जो है दोनों सर उनकी जब कॉम्बिनेशन होती है तो सर रिलेटिवली स्टेबल वायरल जीनोम सर जो होती हैं एंटिटीज वो बनती हैं। तो जो उनकी सर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सर वो भी डिस्टिंग्विशेबल होती हैं, हम इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सर मोज़ेक मल्टीपल फीचर्स के साथ होती हैं। The high frequency of recombination occur may be as consequence of mixed infection of distinct viruses। और रिकम्बिनेशन एनालिसिस जो होते हैं सर हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेक पॉइंट को एंड हॉटस्पॉट फॉर पोटेंशियल रिकम्बिनेशंस के लिए सर। ठीक हो गया, ठीक है। तो one of the tool that we use is RDP4. This RDP4 is like identification and characterization of recombination events in DNA sequence alignments. So DNA sequence alignments में recombination events को देखने के लिए we can use this. So for identification and characterization of recombination events. So and every sequence is considered as a potential recombinant. So अब ये please try to understand this. If we have a different multiple number of sequences, and this is one sequence and this is another sequence, and we have some other sequence like this one, like यहाँ पे हमारे पास this is a sequence, and if this is like this, and we have some other sequence, and multiple sequences are there. So here we clearly distinguish between the two due to the color, but in actual we don't have any color. We have any just a sequence A, T, G, C, and so on. So how we will determine the recombination event? यहाँ पे हमें नजर आ रहा है there is one event of recombination, but in actual we don't actually perceive or we presume or we cannot assume the recombination. So for this, if we are using RDP4, we just give the sequence to the RDP4, and what it will do, it will
it will assume every sequence. It will assume every sequence as a potential recombinant. It will take this as a recombinant. It will take this as a recombinant. It will consider this as a recombinant and then analyze every sequence. And at the end, it may it may give the result that this sequence is actually the recombinant sequence and not the others due to some some values. It will give R score, it will give some other values, and based on that, on those values, we can actually identify this as a potential recombinant. And if you want to check into the detail, and this is actually my paper, and that is the phylogenetic and genome-wide pairwise analysis of the genus Lithivirus. So in this paper, I did genome and wide pairwise distance analysis, and actually the RDP4 and the recombination analysis has been done in this paper. So you can go and check into the detail, and you can identify the recombination, how recombination could occur, and you can actually assume, and you can only predict the recombination in different sequences. So Noreen, if the Iftihar is there, Noreen. Yes, sir. जी, can you run RDP4? सर ये अभी इंस्टॉल हो रहा है. हो रहे हैं, अच्छा. और दूसरा सर Simplot. ये आप देख लें, मैंने सिम्प्लॉट किया था और साथ में बॉस आप चेक कर लें, ठीक है ये. Wait, click share. Wait, इसको कवर करके फिर आखिर में आप उस मीनवाइल ये डाउनलोड भी हो जाएगा. ठीक हो गया. So wait for a while. So after that, another tool is like either you could do RDP4 or do Simplot. For Simplot, so what is Simplot? This is the site for that Simplot. You can download RDP4 from this site. You can download Simplot from this site. And this is identification and characterization of recombination events in DNA sequence alignment. So again, this can be used for recombination events, and only query sequence is considered as potential recombinant. So what's the difference between this and this? Here, what we will do, we will identify one of the different sequences. हमारे पास different sequences होंगे, and we can assume, and we can detect what we can like pinpoint one of the sequence as potential recombinant. We will ask the software that this sequence is a potential recombinant. This is a potential recombinant. And this software will only analyze this sequence as a potential recombinant and other sequence as potential parents of this sequence. So, but for RDP4, it will consider all of the sequences as potential recombinants. So this is the difference between the two, the Simplot and the RDP4. And we have a third tool, and that tool is Plotcon. And Plotcon is identify sequence conservation in two sequence alignment. So we have we will only give two sequences. We will only give two sequences, and in those two sequences, Plotcon will identify conserved sequences in these two. Maybe this region is conserved between the two sequences. It will identify this region that is common between the two sequences. So for Simplot, we need three sequences. We will give three sequences, and we will call it as one sequence as recombinant, potential recombinant, and the other two are maybe parents, the major parent and the small and the minor parent. But for recombination, we can give multiple sequences, and all those multiple sequences will be analyzed by the software as potential recombinant, and it will pick up one of the sequence as potential recombinant, and we can identify that. It will give all the values for all of the sequences. So this is about the three tools. So if we can see the result of these three tools,
what will happen? This is the result of Simplot. So in Simplot, these are three sequences. This 064 is a sequence shown in gray color. 057713 is another sequence. This is the name of that sequence, and this is the accession number. So this is represented in the red color, and 0677Z5 is the third, shown in the black. So if you can see, this is a graph, and this graph is important. Try to understand this graph. This shows that a value above, like if this is above, so this is being considered. So this means that this sequence is black. Wait. The initially this sequence was in the start of the sequence. It is this one. Then this is the red one. Then so this will be like the rest. This sequence, the forthcoming sequence will be this one, followed by again the black one. This one, this is high, and after that again the red one, and after that again the black one. So we will get this sequence. We will get this sequence from the plot, from the Simplot. So this is a high similarity. After that, this sequence has a high similarity with the red one, and then high similarity with the black one, and then high similarity with the red one, and then high similarity with the red one. So we will get this sequence. We will get this sequence. So now, if the same three sequences were checked in the RDP, what will be the result of that RDP? The RDP gave the same result in a different way. That is, the one of the parent is this one, the red parent, this one. The black one is this one, and now this is the progeny. Now, if you can see, this is shown like this. This is taken from this one. So again, this one. The red one is this one. So this is the red one. And the black one from here. So this is the black. Again, this one again red from here, and again black from here. So, and this is the same thing that we have identified here. So this is actually the different representation, different tools being used for the same analysis. And if you can see it in the Plotcon, this is the Plotcon result, this is the RDP result, and this is the Simplot result. In the Plotcon result, we actually have two sequences. We compare two sequences, and we check the similarity of the two sequences. So this red one, this one, has been compared with 05YL5. And the more the lines, they are more similar. So here it is the Plotcon. So this dissimilarities are more. Sorry, dissimilar. This is dissimilar in here. So this red one is has more dissimilarity with the 05, this sequence. So these lines are more, means that is more similar. And again, this YL5 is, this is actually the resulting sequence. This is the YL5. 0YL5 is the progeny actually. So this progeny has been checked with this one, with the red one, and has been checked with the black one. So this progeny is when checked with the red one. So that means that has dissimilarity here. So this is not similar to the red one in this region. So here you can see this is not similar to the red region. So and this is more similar here in this region with the red one. So this is similar in this region, in the red one.
And again some similarity here and this one, and again at the end this is dissimilar with the red one. So this is dissimilar with the red, this is not similar to the red one. So when we compare this progeny sequence with the black one, so now this is more similar to the black one. So here you can see this is more similar to the black one, and dissimilar with the black one. So with the black, dissimilarity occurs. So that means actually that is from the red one. And then again, more similarities with the black one. So this is more similar with the black one. And again, dissimilar, not similar to the black one. And this is not similar. That means it is similar to the red one. And again, more similar to the black one. So this is more similar to the black. And this is how these three different tools give same results. So this is with Simplot, this is with RDP, and this is with Plotcon. Am I clear? Yes, sir. So these are three different tools and giving us three different results. Noreen, डाउनलोड हो गए तीनों टूल्स? सर सिम्प्लॉट हो गया, आप देख लें, वैसे तीनों हो गए हैं। अच्छा, शेयर करें स्क्रीन। सर आप अलाउ कर दें। जी प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो कुछ स्टूडेंट्स क्लास में आना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके नेट डिस्कनेक्ट हो गए, आप अलाउ कर दें। जी कह रहे ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छा देखें, ये जो है दिस इज सिम्प्लॉट। सिम्प्लॉट को क्लिक करें। हाँ, यू नीड सम सीक्वेंसेस बिफोर यू कैन एनालाइज। सो यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको ओके करें, यहाँ पे क्वेरी सीक्वेंसेस और सारे सीक्वेंसेस आपने ऐड करने हैं एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट। सो न्यू ग्रुप, ऊपर न्यू ग्रुप को क्लिक करें और वहाँ पे अपने नोटपैड में अपने सीक्वेंसेस को ऐड करना है एंड यू कैन ऐड द सीक्वेंसेस हियर इन द सिम्प्लॉट। और इसके बाद ये आपको सिम्प्लॉट एनालाइज करके दे देगा, ठीक है। और रिजल्ट आपके पास बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह मैंने आपको रिजल्ट दिखाए कि उसी तरह आपको शो होंगे। अच्छा, इंटरफेस दूसरे का दिखा दें आरडीपी का। दिस इज द आरडीपी। आरडीपी में आप क्या करें? जी जी सर, ये सीक्वेंस हम एनसीबीआई से लेंगे? सीक्वेंसेस एनसीबीआई से लेंगे। आपने सीक्वेंस को डाउनलोड करना सीखा है ना? यस सर। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप लोगों ने सीखा है, तो वहां से डाउनलोड करें, एक नोटपैड फाइल बनाएं एंड उस फाइल में सारे जो है वो फास्ट ए फॉर्मेट में हो एंड यू कैन लाइक एनालाइज विद दिस। अब ये ओपन को क्लिक करें, ठीक है। ओपन को क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा कि फाइल कहाँ पे है, तो आपने कहीं पे सेव करना है फास्ट ए फॉर्मेट में या नोटपैड में, तो वो आप इसमें ओपन कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट क्लिक रन। आपका ये हैंग हो गया लेकिन चलिए नो वरी, ये यहाँ पे जब सीक्वेंस अपलोड हो जाएंगे, यहाँ पे सीक्वेंस आ जाएंगे और यहाँ पे इसके बाद जस्ट क्लिक रन। रन जब क्लिक करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। काफी टाइम लेगा इसका, ठीक है। इसको मिनिमाइज करें। अच्छा, प्लॉटकॉन में जाएं। अच्छा, आपने दोबारा ओके था, ठीक है। प्लॉटकॉन में जाएं और दैट इज ऑनलाइन, दिस इज ऑनलाइन टूल प्लॉटकॉन। यहाँ पे सीक्वेंस पेस्ट करें टू से अपलोड अ सीक्वेंस फ्रॉम योर लोकल कंप्यूटर। यहाँ पे सीक्वेंस पेस्ट करें, इंटर द सीक्वेंस, और यहाँ पे मैनुअली ये चूज फाइल कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यू हैव डिफरेंट ऑप्शन, ठीक हो गया। जस्ट ये सिर्फ इंटरफेस देखना था। तो और नीचे जाएं, इसको स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपने नेम देने हैं इसको, ठीक है। और नीचे जाएं, हाँ, और यहाँ पे रन प्लॉटकॉन। प्लॉटकॉन को जब रन करेंगे तो ये एनालाइज करके दे देगा।
ठीक है। तो टू अपलोड डेटा फ्रॉम योर लोकल कंप्यूटर, आपने नोटपैड फाइल बना के उसमें ऐड कर लो, यहाँ पे जस्ट अपलोड कर दें तो ये आपका वो कर देगा, एनालाइज करके दे देगा। सो दीज 3 आर डिफरेंट टूल्स, ट्राई देम योरसेल्फ एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको प्रेडिक्ट किस तरह करेंगे, किस तरह पता चलेगा, इसके रिजल्ट आएंगे किस तरह, सो यू कैन वर्क विद दैट। ठीक है। बाकी अगर आपका ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, किसी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं रिसर्च पे, तो ये आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। For the class, just to go through these things